All right, so it's a pretty big day for the Indian Navy. INS Vikrant is being commissioned today by the Indian Prime Minister. These are live visuals that you are getting at this point of time. Remember, the INS Vikrant is a completely and indigenously built aircraft carrier, the biggest that India has built in its history. And this, of course, is a big moment. It is estimated that it can carry at least about 45 of these aircrafts on top of it. And this, of course, is a completely and indigenously built aircraft carrier. सलूट देते हुए और ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ आना इन सभी के लिए गौरव की बात है और नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन। Captains of top and heads of department, various respective departments. Now, what this, of course, does is that this indigenously built aircraft carrier puts India in an elite club of just 5 other countries that have the capability to construct their own indigenously built aircraft carriers. So the Indian Prime Minister is all set to commission India's first indigenous aircraft, the INS Vikrant, in Cochin. And the ceremony of this, of course, has begun in Kochi. During the event, the Indian Prime Minister will also unveil a new naval ensign. And this, of course, will do away the colonial remnant. And this is set to befit the rich Indian maritime heritage. Lieutenant Commander Ritesh Sharma, Lieutenant Commander Shashank Yadav. Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. Men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and lead playing the tunes of Vikrant. आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। और तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिश्निंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहां पे मौजूद हैं और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहां पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। The motto of the ship, Jayam Sam Yuddhi Spradaha, which means, and I quote, I defeat those who dare to fight against me, unquote. Something that truly epitomizes the size and spirit of the ship. Overwhelming audience there. The same spirit that is personified through the glaring eyes of our men on parade, our men in uniform that you see right on your screens, immaculately dressed and brimming with the Josh.
the passion for the nation. बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि इस जोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया गया है और प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर रक्षा मंत्री, केरल के राज्यपाल भी मौजूद हैं। So this is a big moment for the Indian Navy. The INS Vikrant, remember, is the largest ship that's ever been built in India's maritime history. It's been built at a cost of a staggering 20,000 crore rupees. It's been named after India's first aircraft carrier, which was in service from 1961 till 1997, that played a vital role in India's war against Pakistan in 1971. Now, the INS Vikrant's vital statistics are essentially this. It is 262 meters long. It is 62 meters wide. It has a displacement capacity of about 43,000 tons when it is fully loaded. It has a maximum design speed of about 28 knots with an endurance of about 7,500 nautical miles. Now, with its commissioning, India, of course, has joined an elite club of countries. Only 5 other countries can in fact build a completely an indigenous aircraft carrier. Countries such as the United States, the United Kingdom, Russia and France are the only 5 other countries that have the capacity to build an aircraft carrier of this nature, and India is of course the 6th nation to acquire this capacity. Now, INS Vikrant has been designed by Indian Navy's Warship Design Bureau. It's been built in the Cochin shipyard. And the warship has been built using indigenous equipment and machinery that's been supplied by India's major industrial houses, as well as over 100 medium and small scale enterprises. It is capable of supporting about 30 aircraft, MiG-29K fighter jets, Kamov-31 and the MH-60R multi-role helicopters. Advanced light helicopters and also light combat aircraft are to be deployed on this ship once it is battle ready. In a short while, our Honorable Prime Minister will be commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country, and has been realized thanks to the efforts of the Indian Navy, Cochin Shipyard, DRDO, OEMs, and other stakeholders. This vessel underlines the depth of the shipbuilding capabilities of Cochin Shipyard Limited, passion and commitment of its engineers, professionals, and workers. This project, with 76% Indian content, also brings to the fore the significant industrial prowess of our country and is a major step in our quest towards a truly Atmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has led from the front and has inspired the entire nation to believe in ourselves and set high targets. Sir, with confidence, we can assure you that IAC is a prime example that the country can set high targets and achieve them. Ultimately, the IAC is all about Team India. On behalf of the entire Team IAC, it is my proud privilege to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Cochin Shipyard for commissioning IAC Vikrant. I welcome Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan, Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Raksha Mandri, Shri Rajnath Singh, Honorable Minister for Port, Shipping and Waterways, Shri Sarbananda Sonowal, and National Security Advisor, Shri Ajit Doval, to this function. I welcome Raksha Rajya Mandri, Shri Ajay Bhatt, and Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, to this function. I welcome the elected people's representatives, flag officers, diplomats, senior officials from the government, the nation's most respected military veterans, and all other invited dignitaries to this function. I express
CSL's gratitude to the Indian Navy, the Ministry of Defence and the Ministry of Port, Shipping and Waterways for entrusting CSL with the construction of India's first indigenous aircraft carrier. I wish good luck and God's grace at all times to this majestic vessel and all the men and women who sail in her. Namaste, Jai Hind. I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, to kindly address the audience. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Chief guest this morning for this momentous occasion, senior dignitaries on the dais, Excellencies, senior dignitaries in the audience, former chiefs of the Navy, Commander-in-Chiefs, flag officers, esteemed veterans, veterans of the erstwhile INS Vikrant, distinguished guests, employees of CSL, commissioning crew of Vikrant, ladies and gentlemen, नमस्कार। आज भारत में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप को कमिश्निंग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। ये कमिश्निंग पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। As the flag bearer of Indian Navy's unwavering commitment to Honorable Pradhan Mantri ji's vision of Atmanirbhar Bharat, it is only befitting that Vikrant be commissioned under his hand as we move proudly into the Amrit Kal. आजादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है एक फुली आत्मनिर्भर नेवी बनना, जिसके अंतर्गत हमारी सभी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड वेसल्स एंड सिस्टम्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगे, ताकि हम एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स बने रहें। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित 5 प्रण विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, हमारी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं कर्तव्य की भावना की द्वारा इस रास्ते पर अग्रसर रहेगी। न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विक्रांत इस अमृत काल का एक अभूतपूर्व आरंभ है और इस शुरुआत के लिए मैं सीएमडी सीएसएल, डायरेक्टर जनरल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिंट और उनकी टीम्स का अभिवादन करता हूं। हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर एर्स्टवाइल विक्रांत served the country for 36 glorious years and played a significant role in the 1971 war, striking fear into the enemy's heart. आज मैं इस आधुनिक और शक्तिशाली विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर और क्रू को ये कहना चाहूंगा कि आप सबका कर्तव्य रहेगा कि इस महान लीगेसी को और निष्ठा एंड डिवोशन के साथ आगे बढ़ाएं। May all who sail on Vikrant be guided by our core values, duty, honor, courage, and serve with selfless devotion. मैं सभी डिग्निटरीज और गेस्ट को आज इस इम्पोर्टेंट दिवस पर यहाँ उपस्थित होने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, जिनका प्रेजेंस विक्रांत के क्रू को इंस्पायर करेगा टू डू द ड्यूटी एंड डू इट वेल एवरी डे, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम।
शानवरन। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नौसेना के नए निशान का अनावरण किया जाएगा। इस निशान में किए गए बदलाव, नए निशान में अंकित अष्टकोण छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्ध चिन्ह से लिया गया है, जिसे भारतीय नौसेना ने पुनः अपनाकर अपने देश की महान संस्कृति और संपदा को एक बार फिर उजागर किया है। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, श्रीमान कृपया अपने कर कमलों द्वारा भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण करें। नौसेना का नया निशान देखा तो दिल की धड़कन ही रुक गई। एक बार जोरदार जानदार तालियों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। और आइए अब भारतीय नौसेना के नए निशान पर एक छोटी सी फिल्म देखें। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness, and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी. As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. अब मैं निवेदन करता हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
Narendra Modi ji, Honorable Governor Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, Honorable Chief Minister Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sri Sarvananji Sonowal, National Security Advisor Sri Ajit Doval, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर एमएस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधु एस नायर सीएमडी सीएसएल, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। INS विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पांसिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.